You can write the candidate name, date, thesis update. लोगों को करना पड़ेगा इनको तो जो फर्स्ट ईयर है they have to decide the topic and they have to do a protocol presentation at department. So it is very early, but you have to do it as per the instructions. Yes. The topic of my thesis is incidence of postpartum depression and associated risk factors in antenatal women, a cohort study. The protocol was presented in May 2021 and was approved by the ethical committee of the institute. The data collection has been completed and the data is currently entered in MS Excel spreadsheet and analysis is under evaluation. Out of the following subheadings, I have written the introduction, review of literature, methodology, aims, objectives. Sir, are we also supposed to write abbreviations? So, for example, if we are writing DSM-5 criteria, so DSM the norm that first time wherever it occurs. Okay, for example, introduction, your first time you have to write full form diagnosis, statistic manual, and you have to write in bracket the abbreviation. Then you can use that abbreviation throughout that section, throughout the thesis. Okay, it is अगर एक सेक्शन में जैसे रिव्यू प्रेजेंटेशन में आप एक बार कर लो, डिस्कशन में तो नहीं करना पड़ता. अगर पहले क्या होगा तो अप्रूव्ड एब्रिविएशंस है वही आप जो बाकी एब्रिविएशंस है एनडीडी जो भी है rTMS, ठीक है, जो भी तुम्हारा एब्रिविएशन है फर्स्ट टाइम यू हैव टू राइट फुल फॉर्म ब्रैकेट में वहां पे लिख देना है कि ये एब्रिविएशन है. देन यू कैन यूज दैट एब्रिविएशन तो जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर करेगा वहां पे उसका अगर कोई स्पेशल तुमने अगर पेपर के लिए कोई एब्रिविएशन बनाया है तो वो फिर उसका एक एंड में क्या तो तुम वो लगा सकते हो ना. So like postpartum depression PPD, can I use it? You can use it throughout the thesis, but you have to first time wherever you use, you have to write. That is क्योंकि वो तो वो नहीं PPD is not a you can use your own abbreviation. Yes, it is very frequently being used in the, but then you need to as I said, abbreviations for कुछ और चीजें जैसे वो technical terms हैं which are known and which do not need to explain the text. That is more relevant in biochemistry kind of a thesis. वहाँ पे हम abbreviation सब चीजों का देते हैं. यहाँ पे तो उस तरह की हमारी nomenclatures नहीं use करें. So I am yet to write the result discussion, the summary, limitations and future. 105, sir. Sir, out of the 105 patients, sir, 90, 6 patients were unable to be followed up because उनका data तो आप carry करेंगे. Yes, sir. 105 you included. Yes. Out of that, 6 were incomplete. Yes, 6 I was not able to follow. ये भी एक study find ना इतने patient आप नहीं follow, lost to follow. Yes. और and कितने patient percentage में depression मिला? Sir, in 16%, sir, which is 16%. Yes. तो आपकी data sheet आपके पास आ गई है? Yes, sir. But इतना ये तो आपने last update में भी इतना ही बताया. Sir, roughly you were there to 50%, yes, 60% of data collection. Sir, analysis, sir, I had done it actually, but it is wrong. As I have divided it into 2 books. Whose guidance did you take for analysis? Sir, I thought that everyone is applying chi-square, so that is what we were supposed to do. Because this is something which needs some supervision. Yes. So did you approach some of your guides, sir, myself? एक डेटा लेके जाओ, ठीक है, your guide, and first of all, how will you tabulate the results? Okay, what are the factors that you will compare? Okay, and then apply stats. As a blinded means stats. So stat has to be guided. And if the time has been lost in that, then that is very disappointing. Yes. So that is something which is a common sense. So what you need to do is immediately bring your data sheet, clean data sheet. 5 minutes your analysis will be done. Not take more than 5 minutes. Software has to do analysis. Yes. Someone will guide you. Software से कैसे करता है? आपको करके दे देंगे. Tables बनाने में time लगेगा.
But analysis का ही part में हम एक factor में कि chi square is nothing, मतलब it is just a segment of analysis. You can compare weight with height and do a statistical analysis. That is meaningless. Yes. So the factors that you analyze, they should be comparable. They should. So वैसे तो ये आपके methodology में पहले ही हो जाना चाहिए. Yes. पहले ना आप stats क्या लगाओगे? Statistics में क्या लगाएंगे? See, basically your is a risk factor study, cohort study है, तो आप इसमें descriptions करेंगे अपने कितने percentages आपके आए. If you want to divide patients in, ये सिर्फ 16% में depression आया, depression and non-depression patients में आप बाकी risk factors का comparison करेंगे और एक आप multiple regression करेंगे. Results आएंगे, discussion क्या लिखोगे? So that incidence rate is comparable with other studies. And Where whatever are the findings and the factors that you compare with the existing literature, whether it is comparable. If it is not comparable, there are some differences. Then you have to give a hypothesis or an explanation as to why this is different. Okay. For example, age of the mother. Okay. so one thing that came different was in occupation. In most of the studies that I have seen, कि जो मतलब the temporary or part-time jobs that people are doing, they seem to have more depression. And whereas in mine, those who were having like permanent jobs, like Regular clerks, jobs. accountants, regular jobs, they had You can more that can be explained. You can explain, but the factor which you came that day, that ultimately gender कौन सा निकला? yes, sir. Did you Sir, I have made that column. make the column? Girl child, female child. Okay, basically she reported what was the expected. So incidence of postpartum depression and associated risk factors in antenatal women. आप एक को तो मत करते हैं. Yes. Basically incidents में problem क्या आती है या आपके limitation बनती है कि आपने जो sampling की ऑब्स गाइनी ओपीडी से वो कैसे That has to be there has to be a kind of an computer generated or a random set every fifth patient, every 10th patient. not a convenient set. Or say, आपने कैसे करी? Yes, sir. Did you this go there was- and selected? No, sir, this was talked about in the protocol presentation also. So that time also, sir, you suggested that every fifth patient. So you took every Yes. fifth patient for the register. Yes. ठीक है. वो methodology में सब लिखा है ना? Yes. So every fifth patient who happened to be in the second. Now point is कि today is 19th. Yes. So how do you expect to submit your thesis? so you have got an extension अगर वो 25th करो तो बहुत मुश्किल है. Because it is more of a cognitive process. Yes. You're delaying it because of your cognitive process. We all have gone through this. Not as if that we didn't delay. सब delay करते हैं, but now time आ गया है. Yes. I would say cutthroat phase. उसको ना short task में देखो. हाँ. पहले First prepare your data sheet. Hmm. Prepare your data sheet. If you want, you can come to me. 5 minutes will take for analysis. We'll tell you. Tables बनाते रहना है, correct होंगे. Meanwhile, अपने tables के results आपके पास आ जाएंगे. उसके discussion शुरू कर दीजिए. Finish. खत्म. आपका डेटा में सिर्फ टेबल्स बनाने हैं. बस टेबल्स बनाने हैं, स्टैट्स क्या लगानी, कौन सा मेथड लगाना है, बस. वो एक बार आपका हो जाएगा. Then writing discussion for you will be easy because it is like you have to compare with the existing literature and you will have number of factors to discussion. And your seniors were much more proactive. We were the first department actually to submit the thesis. So वो लोग पहले ही, I think 6 months from here, they came with their
introductions, everything. इसमें तुमने कोई रखा था कितने पेशेंट्स मिले हैं? Sir, yes, sir, I calculated with the formula. नहीं कितने था कैलकुलेशन कितना किया था? 105. Yes, sir. 105 patient to follow up is if you like reduce you have calculated it. ठीक है, फटाफट कर लीजिए। Yes, sir. करके टेबल्स बना के यू टेक हेल्प फ्रॉम इवन फीडबैक सबसे ले लो। Yes. क्या होता है कि समटाइम्स the number of lines that goes through your data is more. हो सकता है surreptitiously कोई एक point raise कर ले and that may be because it will be evaluated by somebody fresh. Yes. प्रॉब्लम ये है thesis में कि जैसे तुम कर रहे हो okay you are going through that data for one. So when you present the data you take some things for granted. क्या करते करते लगता है कि तो पता ही होगा। जो आदमी फ्रेश देख रहा होता है उसको वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें all three of you also take the help of your peers कि समझ में आना चाहिए। Whatever tables you make, whatever things you write, वो दूसरे को पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ये एक मिनिमम वो होना चाहिए and that for that you yourself can't do। क्योंकि जो लिखता हो तो लगता है तो ये तो करेंगे मैंने। ठीक है। Good morning, everyone. The guide for my thesis is Dr. Sumit Khatri. The co-guides are Dr. Shobhit Kaga and Dr. Mohit. The topic of my thesis is efficacy of adjunctive theta bus transcranial magnetic stimulation in acute mania, a randomized placebo-controlled study. The protocol was presented by the ethical committee in month of May. The protocol was approved by the Institute Ethical Committee. The study is registered by the CTRI. The introduction, review of literature, methodology, aims and objective are being reviewed for plagiarism. The results have been are being calculated. The discussion is being complied. The data has been collected for all participants. The data was entered in the MS Excel spreadsheet and analysis was done using SPSS version 28. Test of normality have been applied, normal probability test and Kolmoglu-Smirnov test. Number of episodes in CPs at equivalent dose failed to meet normality, so Mann-Whitney U test has been applied. ITT analysis has been done, that is, it has included all patients irrespective of any dropouts. I have done the ITT analysis. We did not find any significant group time effect for clinical variables in the ITT analysis. I have yet to do the pre-protocol analysis, which will include all the patients who are per part. What is this? Sir, I have compared all the age, the number of episodes, motor threshold, gender, marital status, religion, habitat, social economic status, education and occupation, and found it comparable between active and sham. So these are the clinical variables, sir. No, sir. Severity and So different from the preceding phase, and W is different from the worst phase of the illness. So I did not find it significant. how did you do preceding phase and worst phase CPI? So we compared, so scale में we compare it with the this week and the preceding week. We compare the symptoms and then we tell if it is mild, moderate, severe, how much improvement has been seen. Clinician, ठीक है, तुमने किया, पर usually one clinician has to see, right? Yes. तभी वो कर सकता है। ठीक। So, but I think you should have submitted it. So you read your paper, you read your award presentation. There is a reference. Yes, sir. 3-4 pieces have been done with similar lines before you. I can understand your other colleagues struggling a bit. आपको सब कर चुकी हैं. Just put it up on paper and present it. You should have actually presented your submission of thesis now will give you a lot of lines. So I have to make 2 more tables. I just have to done another analysis and make that table. Please go again when you've done your completed it, it goes on refinement till the last yes. you finish it. Finish it and better to get it checked by others. Yes. Okay, because you yourself will keep on checking. वो तो revise होता ही रहता है हमेशा आपको एक बाइंडेड या एक सॉफ्ट कॉपी कंप्लीट जितना भी आपने कर लिया सबको भेज दें and then
वो अगर कुछ करना है तो कर लो, लाइक इट इज लाइक इट शुड बी एक्सेप्टेबल। ओके, वो तो मिनिमम स्टैंडर्ड है, बट डोंट गो ऑन मेकिंग परफेक्शन। कोई वो ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेगा तुमको, प्लीज जस्ट You need to correct your need for society which I told you. Yes. आपका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है, आपका आइडिया भी है, डिस्कशन कैसे लिखना है, सब आप कर लीजिए, वो क्लियर करेक्ट कराओ। हाँ जल्दी करिए। by this week finish your thesis. Yes. Don't delay it next week or submit कर दीजिए। सबमिट करके फर्स्ट आइटम होगा, maybe it will go through 2 to 3 उसके एडिशंस होंगे, so by actually deadline you will be able to actually give it. I'm not very confident about whether the 2 colleagues will be able to give it, but I think आप deadline से पहले कंप्लीट कर लो, डोंट ओवर, ठीक है, जितना है उतना कंप्लीट कर लो। लाइक इफ यू हैव टू सबमिट इन द एंड ऑफ द वीक, so by that I have actually given introduction R1 methodology for plagiarism. So once the plagiarism came 40, then I corrected it. It came down to 14. Then again I sent it to run. Then again the plagiarism came back, and that's all. It came back, increased 9% आ गया, 6 से 9 आ गया. less than 15% तो ठीक है। नहीं सर, सिर्फ जैसी मेथोडोलॉजी में मतलब it's increasing instead of decreasing. आपको पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा। So after paraphrasing, if लेकिन one आपने ऐसा report, पैराफ्रेज किया कि वो पहले से कॉपी पहले पहले वाला वाला हो गया, पहले किया वाला हो गया, तो वो करना पड़ेगा। उसमें वो देखो, उसको लोकेट की कौन सा लाइन है वो बता देता है, कौन सा तो phrase, कौन सा प्रीति line मैम का है। पेपर ही और 5 सर का पेपर से Even last edition of the previous paper, I had to give to sir to paraphrase the full paper because methodology has been same. yes. करना पड़ा। Basically, give it a write-up. So plagiarism है fine, वो धीरे-धीरे modify होता रहेगा। अगर बना लो, एक spiral करके दे दो। Plagiarism ultimately last में जितना बचेगा उसको सबसे लास्ट में करो, एक बार thesis चेक करा लो, प्रेस को paraphrase करके वो पहले कर लो, चेक करा लो। Don't let that be a limiting factor. कंटेंट तो चेंज नहीं होगा उसमें, उसमें जस्ट वर्ड की फ्रेजिंग चेंज होगी, कंटेंट तो चेंज नहीं होगा। और जहाँ पर आप स्पेसिफिकली जैसे डीएसएम के क्राइटेरिया है, आईसीडी क्राइटेरिया, वो तो आएंगे ही, वो तो क्या कहते हैं, कैच करेंगे तभी 3% का रखा है। And it will not involve the references. References आपके plagiarism के स्कूल में नहीं है। अभी तो 15% दिया है, तो 0% नहीं देंगे। 3% क्वाइट उसमें वो अगर जैसे ऐसा है कि अगर तुम्हारे 3 सेंटेंसेस जिसमें कि बीच में आरटीएमएस है तो वो ज्यादा करेगा, तो सेंटेंसेस में अगर आप सेंटेंस पैराफ्रेज कर दोगे वो फ्रेज बच जाएगा सिर्फ आपका सेंटेंस। जैसे इवन एसजीआर और आईएमएचएस वो कैच कर लेगा अगर आप फुल करोगे, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। दैट इज व्हाई सेंटेंस अगर आप चेंज करोगे, डोंट गो फॉर फुल सेंटेंस, फ्रेज को है ना, फ्रेज तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। Guide for my thesis is Dr. Sumitri sir, co-guide is Dr. Dhyan sir and Shruti sir. The topic for my thesis is the role of melatonin as an adjuvant in managing sleep impairment in opioid withdrawal patient, a randomized controlled trial. The protocol was presented by the at Ethics Committee in the month of May. Protocol was approved by Institution of Ethics Committee and the study is registered by CTRI. The data has been completed. The data was entered in MS Excel sheet and analysis under evaluation. The introduction, review of literature, methodology, aims and objectives have been done and are being reviewed for plagiarism, and the results, discussion and summary are under evaluation. रिजल्ट्स तुमने टेबल बनाए थे, आपने कर लिया उसमें? हाउ मेनी पेशेंट्स यू टुक? 71। 80. जो डेटा है उसका रिजल्ट 71 आ रहा है, 80 है। देयर इज सम कंफ्यूजन, 80 पेशेंट्स, सो यू टुक 14 minutes, 14. आपके जो टेबल्स बनाए हैं उसमें आई वांटेड आउट, उसमें कुछ वो है, ठीक है? I made the table again. टेबल बना लो, आपका भी काम तो मतलब डेटा इज कंप्लीट। मैं फाइंडिंग्स में जो है फिर एक बार टेबल्स बना लो, देन वी कंपेयर क्या है। टीटेस लगाया, काई स्क्वायर लगाया, इसमें टीटेस लगाया, इसमें मतलब सम स्कैम शेयर्स को, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट
go straight forward for statistics. First thing is we have to make table, find things which we have to compare. Then we will decide what test you have to apply, and then you apply that. Okay. एक ही variable को like what she did in result is that one variable she has compared in number of methods, but that is not useful. अगर हम compare कर रहे हैं दो factors के लिए, तो 2-3 टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है. हम लोग एक टेस्ट यूज करके अब नॉर्मलिटी देखो, नॉर्मलिटी है तो एक टेस्ट लगाओ, एन का स्क्वायर लगाया, नॉर्मलिटी नहीं है तो पोस्टल वैल्यूज लगाना. फर्स्ट थिंग इज मेक टेबल्स. जैसे एक पूरा टेबल सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल का एक टेबल बनाओ. ओके, देन यू कैन ब्रेक इट इनटू टू की एडजॉइंट ट्रीटमेंट विदाउट एडजॉइंट. ठीक है, वो बना लो, उसको भी कंपेयर कर लो, आप उसी टेबल में आ जाएगा. ठीक है, फिर फैक्टर्स को आगे मूव कर लेंगे. फिर स्कोर जैसे माइल्ड मॉडरेट सीवियर में एक बार टोटल कंपेयर करो कि मेलाटोनिन विदाउट मेलाटोनिन स्कोर्स कंपेयर करो आपके स्केल्स के. फिर करो आप आपने माइल्ड मॉडरेट सीवियर सब कंपेयर कर रखा है, अलग अलग कंपेयर मत करो. वो बाद में कर सकते हो आप कि माइल्ड में ज्यादा है, मॉडरेट में ज्यादा है, सीवियर में ज्यादा है. अपने हाइपोथेसिस के हिसाब से तो आप एनालिसिस करेंगे. हाँ, टोटल स्कोर्स का हमारा मेन ज्यादा है. एक्चुअली पहली हाइपोथेसिस ये ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी एनालिसिस होता है, सेकंड की होती है, थर्ड की होती है, देन रेस्ट एवरीथिंग इज सेकेंडरी. वो सब एडिशनल एनालिसिस में चले जाता है, व्हिच डजंट हैव मच वैल्यू. आपकी थीसिस इवैल्यूएशन में जाएगी, टाइटल खोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव खोले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव से मैच करेंगे कौन कौन से एनालिसिस, बस कंक्लूजन देखेंगे, भेज देंगे. प्रोफाइल और इसलिए आपको कंपेयर करने की बहुत सा कंपेयर. ऐसा नहीं कि किसी एक का एज ज्यादा जैसे हो गया. शीट दीदी ने की है, बिल्कुल वैसे ही करना. ठीक है, वो आपको दो को कंपेयर करना है. फिर आपको आपके इंसोम्निया के स्कोर्स हैं वो कंपेयर करना है टोटल. ठीक है, वो आपको मेन करना है. दैट इज द क्रक्स ऑफ इट. बाकी एडिशनल कि हम माइंड ग्रुप आपस में कंपेयर कर रहे हैं, स्पेल कंपेयर कर रहे हैं, मेल फीमेल को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज सेकंड. फिर टोटल पॉपुलेशन उनके वेरिएबल्स कंपेयर करो, both the group should be compared. Okay, if there is some finding then you should be able to explain क्या है. और उसके बाद में scores जो है total, okay, वो melatonin as an adjuvant without adjuvant वो आपको compare करना है. होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं. अगर ऐसा don't take it कि आना ही चाहिए significant. ऐसा नहीं. तो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होती, नंबर में होता है तो हम लोग देख लेंगे कि फिर उसके बाद देखते हैं कि माइल्ड में, मॉडरेट में, सीवियर में कहीं पे कोई चेंज है या आपके वो जो पेट्रोल के साथ क्या काउस लगाया आपने, क्या लगाया वो सेकेंडरी हो गया. मतलब इंसोम्निया मेन कर रहे हैं, पेट्रोल तो हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, पर वो हमारा सेकेंडरी हो गया कि काउस में कोई चेंज है कि नहीं है. टाइटल पे जाना, कितने पेशेंट आपने कंप्लीट लिए थे, कितने आपने कंप्लीट किए थे, 10. तो आपको सारा डेटा डालना लेवल पर. ठीक है, तो अभी आप डेटा शीट ले आइए, तो ये हम आपको बता देंगे. 80 पेशेंट में 71 स्लीप इम्पेयरमेंट रहा होगा. 80 पेशेंट्स लिए थे ना. अच्छा, 80 में जितना स्लीप इम्पेयरमेंट होंगे. हाँ, बट डेमोग्राफिक डेटा आपको सबका मतलब आपको जो अपनी जो एल्गोरिथम बनाएंगे उसमें लिखेंगे इतने एनरोल किए, इतने क्राइटेरिया में आए, उनको हमने क्लासेस ग्रुप में डिवाइड किया और उनको फॉलो किया. अब तो 40 आपने लिए, उसमें से 40 में से भी कुछ ड्रॉप हुए, तो भी आप उसके लिए आप इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस करेंगे. उनकी ऑब्जर्वेशन सेम है या ब्लैंक छोड़ देंगे. We are also review of literature is okay, और discussion में भी also this is not going to take one week. आप भी कर सकते हैं. अब डेटा शीट ले आइए, जो भी आपको बाकी स्टैट्स क्या लगाओगे, फर्स्ट टेबल गाइडेंस कौन से टेस्ट लगाने चाहिए वो टेबल बना लो पहले में, एंड देन यू आस्क फॉर स्टैट्स अप्लाई, वो स्टैट्स अप्लाई करो. ठीक है, थोड़ा अदिति आल्सो कैन डू, शी इज डूइंग एनालिसिस बाय हरसेल्फ. तो फिर फटाफट आ जाओ, यू कैन टॉक अबाउट प्रिया, देन शी विल क्लियरली टेल यू टेबल वाइज हाउ टू डू इट. ब्रॉड एनालिसिस करते हैं ये ज्यादा instead of 9 2 3 tests. that is going to take much more time and because it's not possible. पहले तो हम लोग खुद मैथ से कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगाते हैं. एक्सेल शीट में स्पेसेस ना पर्सन. ऐसा नहीं है कि अगर आप मैनुअली करते हो तो दैट इज लेस एक्सेप्टेबल, या बिकॉज़ मींस तो
आपको कैलकुलेट करना है काय स्क्वायर या जो वो तो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो द मेन थिंग इज दैट इट शुड बी लाइक प्रॉपर्ली डन, दैट इज ऑल। दो फैक्टर मतलब ये होना चाहिए कि आपका टेस्ट जो है दैट शुड बी एप्लीकेबल, कि नॉर्मलिटी दे करके, डिस्ट्रीब्यूशन दे करके, वो कैसा वेरिएबल है उसका वेरिएबल की क्वालिटी को दे करके कि नॉर्मलिटी है कि क्यों है, तो दैट टेस्ट शुड बी एप्लीकेबल, दैट इज द पार्ट ऑफ इट। मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन जो आई है, अगर आप 2 टाइम्स आपसे मल्टीप्लाई करते हो and the value is more than the mean, then the data is not normally distributed. तो डेटा हमारे पास आता है, पेपर हमारे पास रिव्यू के लगाता है, ये ऐसे देख के बता देते हैं कि ये तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फिर उन्होंने पैरामीट्रिक टेस्ट क्यों लगाया, नॉन पैरामीट्रिक क्यों नहीं लगाया, तो अपने डेटा को ऐसे भी देख सकते हैं। पर आइडियली नॉर्मेटिव टेस्ट, मान लो दिस थीसिस गोस टू समवन इन एम्स, दे विल सी कि नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है नहीं देखी, दैट इज द फर्स्ट बेसिक ऑफ एनी डेटा, बट वो 2 मिनट में हो जाती है, वो इसमें डालना 2 मिनट में। ये तो थोड़ा नर्वस टाइम होता है थीसिस वाला, देन यू नीड टू गिव योर ब्रेन रिजर्व्स फॉर इट, नीड टू गिव इसको वहां पे लगाते हो नोट करो हाँ। ताकि वो रिविजिट ना करना पड़े बार बार। अब आपने पूरा स्टैट्स लगा लिया, फॉर्मूला लगा लिया, फाइंडिंग्स बना दिया और फिर बाद में पता चला कि आपने टेस्ट ही गलत लगाया, देन यू हैव टू रिव्यू। I still remember what Dr. Priya did was the thesis. She used to come to us in the OPD, and what we did with her was we used to tell her कि अभी इतना करें, आज नॉर्मली टेस्ट लगाया है, जाइए इसका टेबल बना लिया। Then she used to write that methodology, टेबल बना लिया, and then उसका डिस्क्रिप्शन। Then second step आ गया, so should have 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूटिव डेज में आपके टेबल्स भी बन गए, आपको समझ में भी आ गया, और सर वांट्स कि आप सारा एनालिसिस कर डालो, क्या वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है के साथ, तो इससे बेटर है कि आप वन स्टेप लेके चलिए, रिवाइज करके यू डू इट प्रॉपर्ली, एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। किसमें कौन सा टेस्ट निकालना है ये फाइनलाइज करके एक कंपेयर करने के लिए एक टेस्ट लगाओ, फिर बाद में देखते हैं इसको ना टाइप करवा देना बस, और ये मिनट्स पार्किंग